Good morning, class. How are you all? Hope you all are doing good. So, let's begin our lecture. हम लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ चुके थे. Have the kindness to wait while I dressed, and with the same grave face he hurried, thought his breakfast, and drove to the police station. Whether the body had been carried. As soon as he came into the cell, he nodded. Yes, said he, I recognize him. I am sorry to say that this is Sir Daniel Carew. अच्छा, क्या होता है कि अब वो निकलते हैं, फ़्रेश हो जाते हैं, फिर जैसे वो फ्रेश होकर निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं जल्दी में से, और फिर रश टूवर्ड द पुलिस स्टेशन, एकदम से तेज़ी से पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हैं. ठीक है, पुलिस स्टेशन की तरफ जाके वो उस बॉडी को रिकग्नाइज़ करते हैं. जब उनको देखते हैं कि उनको पहचान जाते हैं, वो कहते हैं कि ये तो सर डैनवर हैं. गुड ग्रीफ सर, आपने ठीक पहचान. एक्सक्लेम द ऑफिसर. ऑफिसर कहते हैं, इज इट पॉसिबल कि ये हो सकता है? And the next moment, an eye lighted up with a professional ambition. This will make a deal of noise, he said, and perhaps you can help us to the man. And briefly narrated that the maid had seen and showed the broken stick. ठीक है, अब उसे कहते हैं कि आप हमें हेल्प कर सकते हैं बंदे को पकड़ने में. ठीक है, ये सब कुछ हो सकता है, प्रोफेशनलिज्म में आ जाते हैं वो. ठीक है, और उन्होंने उसको ये बताया कि कैसे मेड ने, नौकरानी ने उसको क्या जो सिचुएशन देखी, जो सब कुछ हुआ था, ऊपर पिक्चर्स में जो दिखा रहे हैं वो सब कुछ हुआ था, वो उसको बता देते हैं. ठीक है, वो उसको बताते हैं. फिर वो क्या होता है कि मिस्टर अल्टरसन हैड ऑलरेडी कॉइल्ड द नेम ऑफ हाइडी, but when his stick was laid before him, he could doubt no longer. Broken and battered as it was, he recognized it for one that he had himself presented many years before to Henry Jekyll. ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, वो ऑलरेडी केस वो कर रहे थे, तो उन्होंने वो कहते हैं कि वो तो मिस्टर हाइडी को जानते हैं. फिर जब उन्होंने वो स्टिक देखी तो उनका शक और ज़्यादा नहीं रहा. ठीक है, वो जो थी टूटी हुई थी, बहुत बुरे तरीके से उसने पहचाना. ठीक है, उसके अलावा अब न्यू पर्सन का वो जिक्र करते हैं, हेनरी जैकल. ठीक है, इज़ दिस मिस्टर हाइडी अ पर्सन ऑफ स्मॉल स्टैचर, ही इंक्वायर्ड. ये वही मिस्टर हाइड है जिनकी कद छोटी है. पर्टिकुलरली स्मॉल एंड पर्टिकुलरली विकेट लॉन्गिंग इज़ व्हाट द मेड कॉल्स हिम. हाँ बिल्कुल, नौकरानी ने उसको वही छोटा और अजीब से दिखने वाला बंदा कहा. सेड द ऑफिसर. ऑफिसर उनको बताते हैं. मिस्टर अर्जसन रिफ्लेक्टेड एंड दैन राइजिंग हिज हेड, इफ़ यू विल कम विद मी इन अ कैब, ही सेड, आई थिंक आई कैन टेक यू टू हिज हाउस. अगर आप मेरे साथ जाते हैं तो मेरे ख्याल में मैं आपको उनके घर तक ले जा सकता हूँ. पुलिस से वो कहते हैं. It was by this time about 9 in the morning, and the first fog of season hung in the streets. The cab rolled slowly through the dark, dreary streets, and Mr. Urchelson felt gloomy. सुबह के 9 बजे थे, सुबह की पहली किरण थी, धुआं था. वो फोग जो होती है, आप उसको क्या कहते हैं, फोग था, बस धुंध होती थी. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता डार्क था, फिर आहिस्ता वो साफ़ हो रहा था, मतलब. लेकिन मिस्टर अल्टरसन काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे उसमें. एज द कैब ड्रू अप बिफोर द एड्रेस इंडिकेटेड, द फोग लिफ्टेड अ लिटल एंड शोड हिम अडेंगी street, a grubby eating house, a few shops selling cheap goods, many raised children huddled in the doorways, and many people of different nationalities passing by. And the next moment the folk settled down and again upon that part as brown as nimber, and cut him off from his lowly surroundings. This was the home of Henry Jekyll's favorite, of a man who was hired to $250,000 sterling. अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता धुंध ख़त्म हुई. उस एड्रेस पे पहुँचे जहाँ पर अजीब सी शॉप्स थी, खुराक की चीज़ें थी. ठीक है, शॉप्स पे सस्ती चीज़ें मिल रही थी. बच्चे थे, कोई लटके हुए थे अपने घरों के दरवाज़ों के साथ, कोई खिड़कियों पे. इधर उधर के लोग आ रहे जा रहे थे वहाँ पर. ठीक है, अब एक टाइम आया कि हम उस घर तक पहुँच गए थे. ठीक है, An ivory-faced and silver-haired old woman opened the door. एक बूढ़ी औरत सफ़ेद बालों के साथ आती है, दरवाज़ा खोलती हैं. She had an evil face. उसकी बहुत अजीब सी शक्ल थी. Smoothed and hypocrisy. ठीक है, smoothed, सॉफ्ट और अजीब सी मक्कार टाइप. बट हर मैनर्स वॉज एक्सीलेंट. लेकिन वो बहुत अच्छी खातून थी. येस शी सेड. उन्होंने कहा जी. दिस वॉज मिस्टर हाइडीज, बट ही वॉज नॉट एट होम. ये उनका घर है लेकिन वो घर पे नहीं है. ही हैड बीन इन नाइट
that night very late, कल बहुत वो लेट आए, but had gone away again in a less an hour, but आधे घंटे पहले वो फिर चले गए थे. There was nothing strange in that. इसमें कोई अजीब बात नहीं है. His habit was very irregular. ये उनकी अजीब सी आदत है. And he was often absent. वो अक्सर नहीं रहते. For instance, it was nearly 2 months since she said seen him till yesterday. कहती कल के अलावा 2 महीने हो गए कि मैंने उनको नहीं देखा था, मैंने उनको कल ही देखा था. Very well then, we wish to see his room. ठीक है, हम उनका रूम चेक करना चाहते थे. लॉयर बोलते हैं. एंड व्हेन द वुमन बिगिंस टू डिक्लेयर इट वाज इम्पॉसिबल, आई हैड बेटर टेल यू दैट दिस पर्सन इज, ही एडेड, दिस इज इंस्पेक्टर न्यू कॉमन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. ठीक है, अब वो नहीं छोड़ रही थी. उन्होंने कहा कि मीट हिम, ये इंस्पेक्टर हैं. ठीक है, स्कॉटलैंड यार्ड के. अ फ्लैश ऑफ ऑडियस जॉय अपीयर्ड अपॉन द वुमन्स फेस. शी सेड, ही इज इन ट्रबल, व्हाट हैज ही डन. अब वो औरत परेशान हो जाती है. ठीक है, ट्रबल्स फेस हो जाता है, परेशान हो जाती है. वो कहती है क्या हुआ है, क्या वो किसी मुश्किल में है. मिस्टर अर्टसन एंड इंस्पेक्टर एक्सचेंज ग्लांसेस. ही डजंट सीम्स अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर, ऑब्जर्व्ड द इंस्पेक्टर, एंड नाउ लेट्स अस इन. ठीक है, वो एक दूसरे को देखते हैं, आईज टू आई कॉन्टैक्ट होता है अपने. ठीक है, वो कहते हैं इतना मशहूर नहीं है, बस हमें कमरा देखने दो. वो अंदर चले जाते हैं. इन द होल एक्सटेंट ऑफ द हाउस विच बट फॉर द ओल्ड वुमन remained otherwise empty. Mr. Heidi and only used a couple of rooms, but these were furnished with luxury and good taste. सारा घर खाली था और मिस्टर हाइडी सिर्फ 2 कमरे इस्तेमाल करते थे जिसमें बहुत अच्छा और महंगा फर्नीचर पड़ा हुआ था. A cupboard was filled with food and drinks. एक अलमारी थी जिसमें सिर्फ खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें थी. The table was set with silver cutlery and a fine China artwork hung upon the walls as gift, as Utterson supposed, from Henry Jekyll, who was much of connoisseurs, and the carpet were thick and expensive looking. At this moment, however, the room bore every mark of having been recently and hurriedly ransacked. ठीक है, अब they were explaining the situation of the house, that how the table was set, the china work थी, wall पे frames थी, ये सारा कुछ वहाँ के रूम की situation के बारे में बता रहे थे. ठीक है, with their pockets inside out, drawers stood upon, and on the hearth there lay a pile of grey ashes, and so many papers had been burned. From these embers the inspector entered the stub of green checkbook which had resisted the action of the fire. The other half of the stick was found behind the door, and as this clinched his suspiciousness. ठीक है, अब वो क्या कर रहे थे, अब वो चेक करते हैं. कपड़े थे, चेकबुक एक पड़ी हुई थी जो कि आधी जल चुकी थी, आधी थी. इसके अलावा उनको वो स्टिक भी मिल गई थी. ठीक है, और वो अब वो और खदशा हो गया था कि ही इज़ द मर्डरर. ठीक है, okay, an officer declared himself delighted. A visit to the bank where several thousand pounds were found to be lying on the murderer's credit completed his gratification. ठीक है, अब वो गए हैं, बैंक गए हैं, वहाँ पर कुछ पाउंड्स मर्डर जो था. ठीक है, जो मिस्टर हाइडी थे उनके क्रेडिट में उनके पास कुछ पैसे थे. ठीक है, कंप्लीट हिज ग्रेटिफिकेशन. अब वो यकीन हो गया कि भाई he is the murderer. ठीक है, you may depend upon it, sir, he told Mr. Utterson. I have him in my hand. He must have lost his head, or he never would have left the stick, or above all, burned the checkbook. He'll need money to alive. We have nothing to do but wait for him at the bank and get out the wanted poster. ठीक है, अब क्या हो गया कि अटरसन को कहते हैं कि मैं तो कंफर्म हूँ. ठीक है, वो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा. ये स्टिक, ये सब कुछ, ये प्रूफ देता है कि ही इज़ अ मर्डर. ठीक है, तो अब क्या होगा, कहते हैं अब उसको पैसे तो चाहिए होंगे, किसी ना किसी वक्त उसको ज़रूरत होगी, तब बैंक आएगा, अब हमें सिर्फ उसके लिए वेट करना पड़ेगा. दिस हाउएवर वाज नॉट सो इजी टू अकम्प्लिश फॉर फ्यू पीपल न्यू मिस्टर ह्यूज. इवन द मास्टर of the servant maid had only seen him twice. His family could nowhere be traced. He had never been photographed, and the few who could describe him different widely as common observations will only on one point were they agreed, and that was haunting sense of strangeness with which he left people.
कहते हैं कि कभी वो इतनी फेमस पर्सनालिटी भी नहीं थी, उसके वो जो मेड थी उसने भी 3-4 मतलब उसको देखा होगा, कोई उसको जानता नहीं था, कोई उसकी पिक्चर नहीं थी, उसकी फैमिली का कुछ पता नहीं चला, और इस तरह वो जनाब तमाम लोगों को अजीब सी सिचुएशन में छोड़ के ख़ुद चले गए थे. सो दिस इज़ योर चैप्टर end of your chapter. Inshallah you will be clear with your exercise in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.